Dear students, please look at the board. Here is the caption, the title, the topic entitled preposition, and at the same time look at this diagram. I have tried to represent something about preposition through the help of this diagram. Okay, वर्तमान आमे at the same time ये जो टाइटल दिया है प्रिपोजिशन एवं जो डायग्राम दिया है आम ताको देखिबा so that we can very easily within a very short span of time learn about preposition. Okay, and remember one thing, preposition is the most difficult chapter not only for the students but also for the teachers, because there is no specific rule. Okay, जेहेतु प्रिपोजिशन कौन सी गोटे माने नियम नाही, कौन सी रूल नाही, तेणुक ग्रास्प करवा बुझा परीक्षा रे स्कोर करवा डिफिकल्ट. यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस डायग्राम. हियर इज द टाइटल एट द सेंटर प्रिपोजिशन. देख प्रिपोजिशन जो आम कहते ओडिया पिला माने जानबे जे कह जाए अव्यय पद. ओके, नाउ आई हैव marked here the first one, the simple preposition, number 2 double preposition, number 3 the compound preposition, number 4 the distinguished preposition, number 5 the participial preposition, and the last one, number 6 the phrase preposition. That means as a whole we will find 6 different types of preposition. 6 प्रकार preposition अच्छी. नंबर 1 देख सिंपल preposition, एटा को कहि सारा पर तुमको डेफिनेशन देबी. देख व्हिच आर कॉल्ड द सिंपल prepositions: in, on, out, of, for, by, since, etc. आकु कहा जाए simple prepositions. Okay, come to the second form, that is double prepositions. When two simple prepositions are used together, they are called double prepositions. देखो in and to, into, out and of, out of. देखो in, out, to दीटा simple preposition आमे एका साइड व्यवहार करूछंदी. out गोटे preposition simple preposition, of हला out simple preposition, दीटा भी हला double preposition. Okay, come to the third type. Here we have compound prepositions. When we compound माने जमिति आमे ताको यौगिक अव्यय, जेतला आमे दीटा प्रिपोजिशन को मिसई देबा बा गोटे प्रिपोजिशन सहित गोटे नाउन बा गोटे एडजेक्टिव मिसई देबा ताको कंपाउंड कर देबा ताको कहा जिवो कंपाउंड प्रिपोजिशंस. फॉर एग्जांपल देखो beside, away, along. And how we form this preposition beside? By plus side becomes beside. Similarly, away, on plus way becomes away. Okay, along, on plus long becomes along. Okay, तेणु देख दीटा शब्द गोटे प्रिपोजिशन सहित गोटे नाउन बा एडजेक्टिव गोटे मिसी जाउछि. मिसी गला पर कोन होउछि ना सेरा गोटे कंपाउंड प्रिपोजिशन होउछि. देख बाय रो बीई हो गला. देख ऑन रो आसीगला ए, तेणु यहाँ गला गोटे कंपाउंड प्रिपोजिशन. कम टू द नंबर 4 टाइप, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिशन. डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिशन को गुड़ा फॉर एग्जांपल हम कहबा 20 rupees a dozen. A dozen means a dozen. Suppose we say a dozen. A means per, a means 1. 20 rupees a dozen means 1 dozen. A means per dozen. A means on. जिते बेला में से जो on रू जोरा कि पर सेंस लगी थी पी आर पर आम से on रू ए नबा I earn 100 rupees a day. A day means per day. सेठी जोरा आम ए कहते ये जो एटा हूँ टेकन फ्रॉम on लिहाई ए जमी देखुं on प्लस वे बिकम्स अवे. तेणु ये
ए है गोटे डिस्टिंग्विश प्रिपोजिशन सेकेंड है कौन जमी कहते 5 o'clock 10 o'clock ओ क्लॉक मीन्स ओ पर देख दिखाई अपोस्ट्रोफी दैट मीन्स तार फुल फॉर्म है ऑफ ऑफ जगह हम कौन करते ना एटा को ओमिट कर दौरान आम अपोस्ट्रोफी देके लिखुं जमी आम कहते 10 o'clock ओके तो ये जो ओ सहित जो अपोस्ट्रोफी रही आउ जोटा ऑन ए आसी कहूँ डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिशन ओके कम टू द नंबर 5th टाइप पार्टिसिपल प्रिपोजिशन व्हेन सम प्रिपोजिशंस आर टेकन फ्रॉम पार्टिसिपल्स मे बी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल जदि कौन गोटे पास्ट पार्टिसिपल बा प्रेजेंट पार्टिसिपल को आम प्रिपोजिशन भाव व्यवहार करवा दैट बिकम्स ए पार्टिसिपल प्रिपोजिशन जैसे कहवा ड्यूरिंग हॉलीडेज ड्यूरिंग संडे एक्सेप्टिंग रामो ओके ये जो दिखाई ड्यूरिंग एक्सेप्टिंग सेविंग नॉट विथस्टैंडिंग रही पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस द लास्ट वन इज द फ्रेज प्रिपोजिशन दैट मीन्स व्हेन one or more than one prepositions are used together in a phrase to form a phrase that becomes a phrase preposition यदि एक रु अधिक प्रिपोजिशन को आम गोटे फ्रेज रे व्यवहार करवा ताको आज फ्रेज प्रिपोजिशन फॉर एग्जांपल देख बाय मीन्स ऑफ बाय आउ ऑफ दुटा लगे इन लिव ऑफ इन आउ ऑफ दुटा प्रिपोजिशन लगी आट दी साइड ऑफ आट ये ऑफ लगी ऑन पर्पस ये गोटे प्रिपोजिशन लगी ऑन तमें ये कौन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस ओके नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशंस द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट ए प्रिपोजिशन इज वी गॉट टू नो अबाउट द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस आम 6 प्रकार प्रिपोजिशन जानले बर्तमान देखा डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन व्हाट ए प्रिपोजिशन इज प्रिपोजिशन क्या कहवा तार संज्ञा कौन आम देखा डेफिनेशन ओके प्रिपोजिशंस आर words used before nouns, pronouns, etc. to show its relationship with the previous word which is a verb or noun or adjective etc. okay then preposition as the word says pre plus provision pre plus position becomes preposition that means the word which is used before a word used before which has its position before prior to जो शब्दर स्थान गोटे शब्द पूर्वर थाए को शब्द पूर्वर मे बी ए नाउन मे बी ए प्रोनाउन मे बी ए नाउन इक्विवेलेंट ता पूर्व लगी कौन पाई ना टू शो इट्स रिलेशनशिप विथ द फोर गोइंग वर्ड द प्रीवियस वर्ड ता पूर्ववर्ती शब्द सहित परवर्ती शब्दर गोटे संपर्क स्थापन करने जो शब्द व्यवहार कराए प्रिपोजिशन लेट अस हैव एन एग्जांपल आर गोटे एग्जांपल देखा केमी प्रिपोजिशन टा यूज होची बिफोर ए नाउन और something like that देखो example I placed the duster on the table okay
I placed the duster on the table. Now this is the simple preposition and the table is the noun, okay, and here the duster also another noun. Here the table and the duster, they are connected, they are related by using the simple preposition on. Okay, now you see on. Acha, another example. She went out of the kitchen. Okay, she went out of the kitchen. You see, now here the kitchen is the noun phrase and went is the verb and out of is a double preposition. Now verb plus noun, here verb and here noun, the connection is established by the double preposition, that is out of, into, out of, these are the double prepositions. Now they are the examples of preposition and their positions. Now the next thing we have to know, very important, that is the whether the prepositions have any meanings. Preposition कौन सी गोटे meaning अच्छी कि for example आमे कहवा on ता माने कौन, in ता माने कौन, of ता माने कौन, from ता माने कौन. यदि आमे कहवा on माने ऊपरे, we are mistaken, बा in माने भितरे, बा of माने र, बा from माने ठारू, यदि आमे एही प्रकार बुझिबा ता माने we have failed to understand the distinction between preposition and another very important part of speech, that is adverb. Now prepositions have no meanings, very clear, be very clear, prepositions have no meanings, एमानकर निजर अर्थ न थाए. ओके, केमिति देख, she went out, she went out, she went out of the kitchen. Okay, mark the difference. Here we have out and here we have also out. The difference is this out and this of, they are double prepositions because they are used before the noun the kitchen. आगुर कही प्रिपोजिशन कौन हुए, गोटे नाउन प्रोनाउन कि सेमती नाउन इक्विवेलेंट पूर्व व्यवहार हुए. एठी जो लगी दी किचेन, ये गोटे नाउन फ्रेज, ता पूर्व ऑफ आउ आउट लगी, तेणुक ये जो आउट आउ ऑफ है प्रिपोजिशन. किंतु एठी देख सी वेंट आउट, एठी जो आउट माने कौन, एटा होची एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये जो आउट एडवर्ब प्लेस, बट दीज आर प्रिपोजिशंस. ओके, मार्क द डिफरेंस. एडवर्ब पार्टिकल बा एडवर्ब रो मीनिंग थाए, किंतु प्रिपोजिशन रो कोनोसी मीनिंग न थाए. इन द नेक्स्ट क्लास I will discuss in particular some of the very common, very important prepositions and how the same preposition on the basis of its use means one thing in one example and the meaning differs, the implication differs in another example. आमे next part रे देखिबा, second part रे देखिबा सेही गुटे preposition on हो, in हो, of हो, for हो, by हो, जे कोन से preposition देखिबा केमिति तार व्यवहार भित्ति सेटा केतले प्रिपोजिशन ऑफ टाइम हेउची, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हेउची, प्रिपोजिशन ऑफ मैनर हेउची, किंबा आउ किसी क्वालिटी होउची, कलर होउची, आमे नेक्स्ट वीडियो देखिबा. थैंक यू वेरी मच.